Hello, my dear student. Namaskar. This is Dr. Delnaz Jokhi from JG College of Commerce, Gujarat University. Well, today, as you see on your screen, this is a very special lecture recorded for you on the topic linear regression. Well, I have recorded this special online lesson for you based on the Gujarat University 2019 latest exam paper for you. All right. The aim of this particular video is two reasons. Number one, we revise the latest Gujarat University 2019 paper with you. You get all the solution with respect to the chapter linear regression. And yes, we will revise all possible important theory and the concepts of doing sums through this special lecture arranged for you on the topic linear regression. So all my dear semester 1 FY BCom students of JG College of Commerce, this is Delnaz ma'am, ready to present before you a special online lecture. Let's begin with some important concepts and theories that will be useful to you. Well, before you start directly with the Gujarat University 2019 paper, I'm trying to revise over here all possible important theory through the 2019 paper, जो आपको आपके एग्जाम में और बाकी एग्जाम में भी आपको काम में आएगा, right? Okay, so you must know, if you are revising regression with me through this 2019 paper, then you must know that the word regression was used for the first time by, as you see on your screen, a yellow highlight, Sir Francis Galton. He used this word for the first time at the end of the 19th century when he was studying the relationship between heights of fathers and heights of sons. Now in regression, you already know that you have two variables because you're studying linear regression. One is x and the other is y, right? एक आपका independent variable है और एक आपका dependent variable है. I think you know all this because this lecture is with the aim कि आपको ये chapter में से revise कर रहे हो. So I expect कि आपको basic theory और formulas already आते हैं, right? So all the best. Let's go further with what is the meaning of regression. Let's quickly revise. Just see important points आपको क्या-क्या याद रखने हैं और ये सब आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स में तो आता ही है, right? All right, quickly. Regression is a statistical technique with the help of which the functional relationship between two variables can be established. और ये functional relationship आपको कहाँ पे काम में आती है? With the help of this, you can estimate the unknown variable for a known variable which is already given to you. याद है हमने क्लास में सम्स किए थे y is equal to a plus byxx, regression line of y on x. उसमें हम लोग byx ढूंढते थे, a ढूंढते थे और बाद में हम x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, याद है? हाँ, जो वैल्यू आपको दी गई है is the independent variable, स्वतंत्र चल तमने आपी देश है. जो आप estimate करते हो is the dependent variable, y, in the case of the example which I gave you. So that is why it's a functional relationship. ये words आपको याद रखने हैं, the technical words. All right, ठीक है. Now, the regression is a relationship between two variables, right? And एक mathematical function आप use करते हो जो मैंने आपको अभी बताया. ये अगर relationship जिसकी हम बात कर रहे हैं between two variables, if you can represent it on a straight line, अगर straight line में representation हो रहा है, then it is known as in particular linear regression. Clear? So पहले मैंने आपको meaning of regression समझाया और अगर ये relationship जो आती है वो एक straight line पे बनती है, then the straight line relation is known as linear regression. So these points you must remember and must revise with me. All right, coming on to what are the regression coefficients? याद है ना आपको byx and bxy perfectly. They are known as regression coefficients. इसका थोड़ा सा technical definition फटाफट देख लेते हैं. The regression coefficients between two variables, what are they? See the yellow highlight. They are numerical measures which show the change in the value of one variable
For a, पढ़िए, for a unit change, एक एकमનો બદલાવ માપે છે. For a unit change in the value of the other variable. All right. And byx, bxy, you already know them very well. They are the regression coefficients. Great going. Now, since we have a special session on the Gujarat University 2019 paper, well, एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी आपको पूछी गई थी रिग्रेशन की, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सो लेट अस क्विकली जस्ट गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओवर हियर. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर, वाज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. याद है हमने सम्स किए थे, जहां पे देखो रेड कलर में देखिए वहां पे, इफ यू सी ओवर हियर, byx into bxy is the product of the regression coefficients, right? ये formulas तो आपको याद ही है कि byx is equal to r sy upon sx, और आप जब bxy की बात करते हो तो आपका फेवरेट फॉर्मूला याद है, हम क्लास में किया था, यस, bxy is equal to r sx upon sy. ये bxy था x पहले, so r sx upon sy, और ये byx है, so r ऊपर sy upon sx. और आप उनका जब मल्टीप्लिकेशन करते थे, when you took the product, if you see very carefully over here, sy gets cancelled, sx gets cancelled, and what remains is r square. And if you remove the square, what happens? R is equal to under root byx bxy. Remember the short sums we have done in class, exactly based on this. Great. अब ये जो आपको green highlight में दिख रहा है, R is equal to under root byx bxy. What is this? It's a very important theory. आपकी इस टाइम के एग्जाम में भी आ सकता है. Read. The correlation coefficient R, which you already know, is the geometric mean between the two regression coefficients. यही green color. The correlation coefficient R is the geometric mean under root byx bxy between the two regression coefficients. Great. Second property, and very important, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का सम हम जो अभी 2 मिनट के बाद सॉल्व करेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट आने वाला है. Please remember that. All right, what is it? Number 2 on your screens. byx, bxy and r have the same sign. माने अगर byx bxy माइनस में है तो r की साइन भी आप माइनस वाली ही लोगे. Remember this. If you are noting down this point, or if you have your reference book with you, quickly इस पे स्टार कर दीजिए. Right? Good. What was the third property of the regression coefficients? If you remember, if two variables have a perfect relationship, perfect माने r की value +1 और r की value -1. याद है ना? Perfect संपूर्ण धन सबन, संपूर्ण ऋण सबन. Perfect positive correlation or perfect negative correlation. That is what I mean by if they have a perfect relationship, then one regression coefficient, see the highlight over there, number 3, is a reciprocal. Ulta, vyast. In Gujarati Hindi it's called vyast, right? One regression coefficient is the reciprocal of the other regression coefficients. What do I mean by it? Look at over here. byx is equal to 1 upon bxy. It's called the reciprocal. All right, great going. Number 4, the fourth property is the product of the regression coefficients is r square. वो तो आपको पता ही है. Which does not exceed 1. Okay, इससे क्या मिलेगा? If one regression coefficient is greater than 1, then the other regression coefficient will be less than 1. ये याद रखना आप लोग theory में, right? And of course, point number 5, very important, क्या है? The regression coefficients are independent of change in origin, but not of scale. याद है मैंने क्लास में बोला था, उगम बिंदु परिवर्तनથી byx bxy स्वतंत्र છે, પણ scale પરિવર્તનથી स्वतंत्र નથી. Please remember that. So this was the IMP theory of your Gujarat University with relation to the properties of the regression coefficients. All right. Now, in the short questions and short theory section, a very important note you must remember, as you see on your screen. So what is the important concept before I go to the first sum?
when both the regression lines coincide. Suppose ये आपकी एक regression line है, ये आपकी दूसरी regression line, it is coinciding, okay, coincide. Then our plus or minus 1 होता है. That means when two regression lines coincide with each other, then they have perfect relation. या तो +1 या तो -1. And when the lines are perpendicular to each other, perpendicular मतलब मैं क्या बोला था क्लास में, गुजराती में क्या बोलते हो, लंब, माने से 90 degrees का एंगल बनता है, right? So when two regression coefficients are perpendicular to each other, R is equal to 0. ये याद रखना, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एक लाइन या वन लाइन या शॉर्ट 1 मार्क में आ सकता है और पूछा गया था इस एग्जाम में भी, right? Okay, great. So now quickly going on to the sums which were asked in your Gujarat University 2019 paper, right? See over here, the first sum for this regression part especially was of 7 marks. Okay, देखिए स्क्रीन पे आपको x और y की वैल्यूज दी गई है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, 4 ऑब्जर्वेशंस है. ढूंढना क्या था, find the equations of both the regression lines from the following data. माने आपको byx भी ढूंढना है, पूरा regression equation, और bxy भी ढूंढना है. इसमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको, byx ढूंढना पड़ेगा, bxy ढूंढना पड़ेगा, a ढूंढना पड़ेगा, right? If you remember that. Okay, so 7 marks का ये sum था, and ये 7 marks के sum में मैंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया है कि जो प्रॉपर्टीज हमने अभी रिवाइज की, हो सके तो उसके कुछ parts we will be revising through this sum so that you gain something more than the 2019 paper, and my students will be prepared for the forthcoming Gujarat University exams. All the best. Let's go ahead with this sum number 1. Now when we did the sum in the class, in the online lectures, you remember we used to prepare tables perfectly well. और मैंने आपको क्या बोला था, आपकी रेफरेंस बुक में और मैंने आपको क्लास में भी कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था, राइट? ओके, सो व्हाट डिड आई टेल यू ओवर देयर, दैट the values of x and y were given to you. Step number 1 of any long sum is depending upon data given to you. पहले x का टोटल ले लो और y का टोटल ले लो. देखो चेक करो, चलो bring your calcies in on your hand, जल्दी जल्दी, come on, 2 minutes, calci ले आइए, जल्दी से ले आइए. Thank you. Come on, calculate with me and help me out. 120 plus 90 plus 80 plus 150. कितना आया calci पे? कितना आया? 440. Very good. Y 40 plus 36 plus 40 plus 44. Total कितना आया? Sigma Y कितना आया? 160. Very good. फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि once आपको sigma X और sigma Y मिल जाए, right? ये total आपने कितने numbers का किया? 4 number का किया, right? So उसके बाद step number 2, आप x bar ढूंढोगे और y bar ढूंढोगे with the normal formulas. What is x bar? Sigma x upon n. And what is y bar? Sigma y upon n. So 440 upon 4 gives you 110 as your x bar. Please remember these values. And I'm sure because we faculties of JG have solved these papers for you online for revision, I'm sure आप मेरे साथ sum कर रहे हो, right? और आप मेरे साथ revise कर रहे हो. That is what I take by default. Okay? ठीक है, great. Y bar कितना आया? 160 divided by 4, 40 आ गया आपको? Great. Now, what did I tell you? When your x bar and your y bar are integers, right? Okay, पूर्णांक कीमत से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. देखो आप सबको पता है. हाँ देखो, ब्लू हाईलाइट देखो, आपकी रेफरेंस बुक में अगर देखना चाहते हो तो पेज नंबर 88 और 89 पे सारे फॉर्मूलाज जो मैंने क्लास में डिस्कस किए थे वो है, और ये फॉर्मूला byx का वहीं से आया है. See, what do you need? Sigma x minus x bar, y minus y bar upon sigma x minus x bar square. तो सबसे पहले सारी गिनती पहले कर लेते हैं and then we will come on to the important working. So let's start. What was your x bar? Please remember 110. What was your y bar? 40. Calci in your hand. You will calculate with me. All right, let's begin. X minus x bar means 120 minus 110. कितना आएगा? 10. Very good. Next, 90 minus 110. कितना आएगा? Minus 20. Be careful of the minus sign, please. 80 minus
आपका माइनस एक्स बार 110, कितना आया 80 माइनस 110 माइनस 30. वेरी गुड माय क्लास. 150 माइनस 110 40 प्लस में. अब इसका टोटल आपको नहीं लेना बिकॉज डिविएशंस टेकन फ्रॉम द एग्जैक्ट मीन आर ऑलवेज परफेक्ट. 0. यू नीड नॉट डू दैट. ओके, इसकी जरूरत नहीं है. सेम वे अब हम वेरिएबल y के लिए we shall calculate y minus y bar. What was your y bar? It was 4040. Very good. Let's go quick. 40 minus 40 0. 36 minus 40 minus 4. 40 minus 40 0. 44 minus 40 4. Total नहीं लेना. Great going. मैंने आपको formula already दिखा दिया. So what is the first thing that you need in the numerator? You need the multiplication of these two columns, right? X minus x bar and y minus y bar. Look at the yellow highlight. It's a multiplication. Quickly. 10 into 0, 0. Minus 20 multiplied by minus 4, minus minus, plus. 4 2s are 8 with a 0, so plus 80. Minus 30 into 0, 0. 40 into 4, 4 4 is 16 with a 0, 160. Very good. इसका total आपको लेना पड़ेगा. So sigma कितना आया? 240. Please note down this number. X minus x bar, y minus y bar. ये दो कॉलम जब हमने मल्टीप्लाई किए और बाजू में मल्टीप्लिकेशन का आंसर येलो में लिखते गए, फिर हमने इन सब का टोटल लिया. तो सब का टोटल मिला के what do you get? You get sigma x minus x bar, y minus y bar equal to 240. Great. Then you will also require the squares. X minus x bar का square, 10 square 100, minus 20 square plus 400, minus 30 square plus 900, plus 40 square 1600. Check कर लो सही है क्या नहीं. Check the totals. All right, good going. 100 plus 400 plus 900 plus 1600 सबका total मिला के you get sigma x minus x bar the whole square is equal to 3000. Great going. The last column. We need to find out both the regression lines. So हमको दोनों का square लेना पड़ेगा. Okay. So y minus y bar square same way 0 square 0 minus 4 square 16 0 square 0 4 square 16 सबका total ले लो कितना आया. Sigma y minus y bar square is 32. I'm sure you have checked on your calculators. Great going. अभी सारी values हमको मिल गई है. I'm sure आपने note down कर ली है कि टेबल में कौन सी जगह पर कौन सी वैल्यू आई थी. Right? Now, quickly, let us substitute all these values and see what we get. देखिए, पहले we'll find out regression y on x. ये आप सबको आता है, right? Okay, y on x you are familiar with. 12th standard में स्कूल में भी आपने y on x की पढ़ाई तो की थी, right? Okay, great. So y on x का what is the mathematical form? Y is equal to a plus byxx, and please remember x के साथ जो भी उसका कोएफिशिएंट है x नो j पण सहगुणकावे, that is the byx, that is the regression coefficient. Okay, उसका फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, right? Sigma x minus x bar, y minus y bar. ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया? What did I tell you? Because your x bar and y bar were integers. Okay. કેવી કિંમત હતી? પૂર્ણાંક કિંમત હતી. માટે તમે આ ફોર્મ્યુલા સિલેક્ટ કરેલ છે. If you want to confirm, I have written over here for you page number 88 and 89 of your reference books. सारे formulas आपको मिल जाएंगे. All right? Come on quickly. byx is equal to x minus x bar, y minus y bar. टेबल में हमको मिल गया था. देखिए, it's on your screen. Yes, 240. Very good. And then you have 3032. जो भी required values चाहिए हमने यहाँ पे substitute कर दी. कितना आया? देखिए, 240 divided by 3000, 0.08. byx मिल गया. The green highlight. Great. अब आपको क्या चाहिए? You want to find out the constant छोटा वाला a. Great. a का formula क्या था? Do you remember? Yes, it was a is equal to, look at your screens please, y bar minus byx x bar. ये फिक्स फॉर्मूला है, राइट? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो लेट्स गो क्विकली. y bar 40 था, byx आपने अभी ढूंढा ऊपर ग्रीन कलर में 0.08, x bar हमने ढूंढ लिया था 110. कम ऑन,
40 minus इसका multiplication. So 40 minus 8.8. Look at the pink highlight. A is equal to 31.2. Are you clear? byx की वैल्यू मिल गई ऊपर ग्रीन कलर में, पिंक कलर की हाईलाइट में a की वैल्यू आपको मिल गई, दोनों मिल गया, great. Substitute these values in your main equation. देखिए a की जगह पर 31.2 plus byx की जगह पर 0.08x. This is your regression line of y on x. Right? अगर ये 7 मार्क का सम था और अगर आधा सम हो गया है तो 3.5 marks का explanation finish. All right? Great going. चलिए फटाफट. Now moving on to the regression line of x on y. आपके 12th standard में आपको शायद x on y नहीं सिखाया था. They had only introduced the basics for it. See अभी college level में advanced level हम regression sums कर रहे हैं, right? But the base of the formulas remain the same, right? Quickly. Same way. x on y में अभी x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है ये अभी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. याद से मैं तो एक स्वतंत्र चल है एक आधारित चल है. परफेक्ट, करेक्ट. सो एज यूजुअल पहले हम bxy ढूंढेंगे. bxy कैसे पता चलता है? y का जो सहगुणक होता है, whatever is the coefficient of y of your independent variable, that is your bxy currently in this context. All right? So same way यही फॉर्मूला पर देखिए क्या ढूंढ रहे हो आप. Now we are finding bxy and y is your स्वतंत्र चल, y is your independent variable. Independent तो मुझे खबर छेते. That is why the numerator is the same, but the denominator is now considering only variable y. Please ये याद रखना. क्यों? Because y is your independent variable. आपको ये पता है. That is why यहाँ पे सिर्फ y के calculations आएंगे. Okay? चलो. 240 is the value for the numerator. Sigma y minus y bar square. हमने ऊपर टेबल में देखा था. याद है ना कितना था? 32. Very good. You remember that. Substitute कर दिया. bxy कितना आया? Calculate करो, divide करो जल्दी. 7.5. Good going. Good going. चलिए. Second step में हम हमेशा क्या करते हैं? a की value ढूंढते हैं. अब देखो. y on x पे हमने छोटा a लिखा था और x on y में हम कैपिटल A लिख रहे हैं. इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. So just remember, whenever we now talk about x on y, हम कैपिटल A लिखेंगे so that there's no confusion when you calculate. All right, people? Good, my dear students. You are doing very good. You're understanding very well. That's nice. Okay, so what's the formula of A? You already know. Capital A is equal to x bar minus bxy y bar. Substitute the values. Come on, quickly. Check for yourself. X bar, y bar, byx, bxy, सब कुछ है हमारे पास. Whatever you require, you substitute. All right. So 110 minus 7.5 जो आपको मिला, multiplied by y bar 40 जो दिया था. Okay, if you calculate, you get A is equal to, look at the yellow highlight. A is equal to minus 190. तो माइनस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, no problem at all. All right. Now we know what to do. A की वैल्यू मिल गई, bxy की वैल्यू मिल गई. Just substitute it. Substitute it in this. X is equal to a plus bxyy. इसमें substitute कर दीजिए. You can see on your screen. There you go. So what is the second answer? What is the second main answer? X is equal to minus 190 plus 7.5y. Congratulations. आपका पहला सम 7 मार्क का फिनिश हो गया. But remember, मैंने आपको बोला था कि we will do some extra calculations based on the property. Property number 1 याद है ना? क्या थी? कि the correlation coefficient R is the geometric mean of the two regression coefficients. चलिए थोड़ा extra information भी calculate कर लेते हैं. बहुत simple है. R is equal to under root byx bxy की values तो आपके पास है ही, right? Under root 0.6. Use your calcs. कितना आया R की value? Yes, the correlation coefficient can be obtained if you have the two regression coefficients. क्या आंसर आया आपको? 0.7745. प्लस में आंसर है. So, what is the type of correlation? As you see on your screen, last line, green highlight, partial positive correlation. All right?
So this is, we are coming to the end of the first sum. Quickly moving on to the 7-mark second sum, which was asked in your Gujarat University 2019 paper, right? पेपर में तो ऑप्शंस होते रहते हैं, as you all know, but यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सारे सम्स हम करेंगे, ठीक है? Great going. Now, see the variety of sums you have in this particular session. पहले सम में क्या था कि आपने रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y और y on x आपने ढूंढी. इस सम में क्या है? 2 regression lines have been given to you. देखिए, the 2 equations of regression lines are 3x plus 2y minus 60 is equal to 0 and 6x plus y minus 75 is equal to 0. दोनों regression lines आपको दे दी गई है और ढूंढना बहुत कुछ है. क्या क्या ढूंढना है पहले देख लेते हैं. You have to find out x bar, means, y bar, दोनों x और y के मीन्स ढूंढने हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है, राइट? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ढूंढना है, सॉरी, जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आपको दिया गया है. परफेक्ट, दैट्स गुड गोइंग. नाउ अभी हमने एक सम किया, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपके पास y on x और x on y में से अगर आपको byx और bxy मिल जाएगा तो r की वैल्यू r is equal to under root byx bxy से आप ढूंढ सकते हो, राइट? सो अभी आपके दिमाग में ये फ्रेश है. सो व्हाट आई विल डू इज कि सबसे पहले हम r की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, राइट? but the one question which should come to your mind as a thinking student is कि आपको 2 रिग्रेशन लाइंस तो दी गई है, पर इसमें से y on x वाली कौन सी? पहली वाली कि दूसरी वाली? x on y वाली कौन सी? वेल, यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रायल और एरर से एज्यूम करना पड़ेगा as far as your BCom level Sem 1 syllabus is concerned. Okay? So what do we do is, जो पहला इक्वेशन दिया है, as you see on your screen, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये धारणा करिए कि आपका जो पहला इक्वेशन है that is y on x, और आपका जो दूसरा इक्वेशन है is your x on y, ठीक है? Alright, so 3x plus 2y minus 60 is equal to 0 is your y on x, ठीक है? Is that clear to all of you? Great going. Now इसमें से आप इसको पहले क्या करोगे? y on x में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? देखिए तो ध्यान से. 2y is equal to minus 3x plus 60, करेक्ट? क्या हुआ? मैंने 3x को उस साइड ले लिया तो क्या हुआ? प्लस का माइनस, माइनस 60 को भी उस साइड ले लिया तो क्या हुआ? प्लस का माइनस का प्लस. So what do you get? 2y is equal to minus 3x plus 60. अब हमको क्या चाहिए? We want y is equal to something. तो ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे? Dividing both the sides by 2. Very good. So 2 to cancel. So y is equal to minus 3x upon 2x. So देखिए, minus 3x upon 2 आ गया, 60 upon 2 आ गया, सही है? Dividing both the sides by 2. Very good. ऐसा हमने क्यों किया? Because हमको y as your dependent variable अलग चाहिए. That is why. Great. अब ये मेहनत आपने क्यों की? Because आपको byx चाहिए था. So इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, ध्यान से कंपेयर करो. Yes. y is equal to byx x plus a. ऐसे लिखो कि y is equal to a plus byx x. It's the same thing, right? और मैंने आपको सिखाया कि x के साथ whatever is your coefficient, x નો જે સહગુણક હોય છે, that is your byx. Very good. So look at the red color things. x के साथ क्या है हमारे पास? minus 3 by 2. वो क्या है? It is the coefficient of your variable x, correct? So that is how from the equation of y on x जो आपने assume किया था, हमको byx की value minus 3 upon 2 मिल गई. I'm sure you understood that and you're revising this chapter very well with me through this particular
एग्जाम पेपर GU 2019। आगे बढ़ते हैं, ये हमने लास्ट ढूंढा। अब दूसरा इक्वेशन भी आपको दिया था और हमने क्या बोला, सपोज पहला वाला आपने y on x लिया है तो दूसरा वाला आप x on y ले लीजिए, एज्यूम ही करना पड़ेगा, राइट? सो सेम प्रोसेस। अब x on y में से आपको क्या मिलेगा, dxy मिलेगा, राइट? और ये हम सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे r की वैल्यू लानी, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, राइट? ग्रेट। सो अब हमको क्या चाहिए, x अकेला चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट शुड वी डू, सी 6x is equal to minus 75 minus y. Okay, so over here what happens is, when you substitute the value, what happens is, when you take it on the other side, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि x is equal to minus 75 upon 6 minus 1 upon 6y. अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये आपका x on y है, और जब ये आपका x on y है तो y is your independent variable, उसका कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, minus 1 by 6. Super, great going. So your pxy, if you compare with this particular equation, is not only 1 by 6 पर माइनस की साइन भी आपको कंसिडर करनी है, right? So your pxy is equal to minus 1 by 6. चलो pxy मिल गया, byx तो आपके पास था ही, and we all know that r का ये फॉर्मूला है. Come on, quickly substitute your values. Great. So r is equal to under root minus 3 by 2 हमने आगे ढूंढ लिया, multiplied by minus 6 1 upon 6 अभी ढूंढ लिया. तो देखिए प्लस और माइनस अंडर रूट 1 by 4, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो r is equal to plus or minus under root 0.25. The answer is minus 0.5. Minus क्यों लिया? Remember when I did the properties with you, I had told you that byx, bxy और r ये साइंस कैसे होते हैं? The signs must be the same. And you always know, आपने स्कूल में सीखा है कि अंडर रूट के बाहर जब आंसर आते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइंस होती है, राइट? So keeping in mind this important note which you see on your screen and what we have already discussed, byx bxy माइनस की साइन है, that is why हम r का आंसर लेंगे, r is equal to minus 0.5. All right, so that brings us to the end of not the whole sum, just the first part of the sum. Okay, अभी याद है? Do you remember? इस sum के अंदर और क्या था? Yes, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ढूंढना है जब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x is equal to 2 दिया गया है. And of course, you know this formula. byx is equal to r s y upon नीचे sx. ठीक है? byx ढूंढ लिया minus 3 by 2, r की वैल्यू अब भी ढूंढ ली हमने minus 0.5, sy ढूंढना है, sx ऊपर दिया है, right? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x is equal to 2, so 2 लगा दिया हमने sx की जगह पर. चलिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 2 ऊपर चला गया, ये -5 0.5 नीचे आ गया. देखिए कैलसी पे क्या आया, sy is equal to number 6. Very good, my class. So that's how you get the value of sy. Standard deviation of y is equal to 6. एक और जवाब आपको आराम से मिल गया. Great going. Now. हमने क्लास में भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, since we are revising. अगर भूल गए हो तो whatever, आपके पास रेफरेंस बुक है तो देख लीजिए. On page number 90 of your reference book, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था. क्या अंडरलाइन करवाया था? कि the two regression lines intersect each other. The two regression lines intersect each other at a point. That is, जहाँ पे intersect होती है, आपको x y का point मिलता है. X is equal to x bar and y is equal to y bar. So that is why, keeping this in mind, the two regression lines intersect each other at x bar and y bar. हम क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे, राइट? ओके, अब आप सबको एलिमिनेशन मेथड आती है. आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है. जो x आएगा वो x बार बन जाएगा, जो y आएगा वो y बार बन जाएगा, राइट? सिंपल एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है. गुजराती में आप क्या बोलते हो? लोकड़ी पद्धति. यस,
लोकनी पद्धति से आपको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू ढूंढना है, सिंपल है। ओके चलो भूल गए हो, थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब कुछ तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने क्या लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 6x plus 1y minus 75 is equal to 0, जो ग्रीन हाईलाइट है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ओके, इफ यू मल्टीप्लाई द ग्रीन हाईलाइट इक्वेशन विद नंबर 2, क्या होता है देखिए, व्हाट विल यू गेट। पहला इक्वेशन तो सेम है, आप मैच कर लीजिए। दूसरे वाले में 6x की जगह पर 2 को मल्टीप्लाई किया, सो 12x plus 2y minus 150 is equal to 0. 75 multiplied by 2 is 150, correct? Okay. लोकनी पद्धति याद है ना? चलो रिवाइज कर लिए। Let's revise the elimination method. Okay. So you change the sign, as you know, plus का minus, minus का plus, correct? And you solve it. Plus 3x minus 12x minus 9x plus 2y minus 2y. देखो ये कैंसिल होने के लिए हमने ये सारी साइंस चेंज करने की मेहनत की। Minus 60 plus 150. That gives you plus 90 is equal to 0. Solve कर लो, देखो क्या आया। X is equal to minus 90 upon minus 9 minus minus plus. What is the value of x bar? X is equal to x bar. हमने अभी डिस्कस किया, according to the property, according to the lines intersecting with each other. याद आया? Right, exactly that point. So x bar is also equal to 10. X की value 10 and 10 is equal to the mean x bar. Very good. Now, as usual, as you do in the elimination method, x की वैल्यू आपको 10 मिल गई है। आपको जो इक्वेशन अच्छा लगता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और y की वैल्यू ढूंढ लीजिए। मैंने क्या किया है, चलो देख लेते हैं मैंने क्या किया है। What have I done? I have substituted the value of 10 as x in the original equation number 2. आपने शायद लिखा होगा, देखिए यहाँ पर है। So ये वाले x की जगह पर I substitute 10. Solve करो, what do you get? Y is equal to 75, 6 tens are 60, plus ka minus, the side change, the sign change, right? Side change, the sign change, remember? Perfect, very good. So, y is equal to 75 minus 60. Kitna aaya? 15, very good. Y is equal to 15, or y is equal to y bar is your mean for y. Perfect. So, you've got both the answers what you were looking for. X bar is equal to 10, green highlight में भी है, Y bar is equal to 15, yellow highlight में भी है, आपको ये वाला आंसर भी मिल गया। I hope you understood how did you get the values of so many things when simple 2 regression lines or equations were given to you. That's great going. Congratulations. Now, the lecture is almost going to get over, but before that, one more 7-mark sum was asked in this unit of linear regression. You remember, no? Linear regression का पूरा एक question होता है. Almost 14 to 17 marks is dedicated to linear regression as far as your Gujarat University exams are concerned. Okay? That is why एक और 7-mark का sum है. पर ये बहुत easy है because आपकी concepts clear है और हम फटाफट revise कर रहे हैं, right? अब देखिए क्या क्या दिया है। Oh, ये तो ज़्यादा easy sum है, देखिए। Estimate x for y is equal to 50 and estimate y for x is equal to 90. वही है, आपको दोनों regression lines x on y और y on x ढूंढने हैं, right? Okay, और फिर x on y में y की जगह 50 सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू मिल जाएगी और y on x में x की जगह पर 90 सब्स्टिट्यूट करके आपको y का वैल्यू एस्टिमेट हो जाएगा, right? Great going. What is given to you? Look at the table. Mean of x bar is 100. Mean of y bar is 40. Standard deviation of x is 5. Standard deviation of y is 2. Oh, correlation coefficient R भी आपको दिया गया है 0.8. तो सम बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत इजी हो गया। चलिए उठाइए कैलसी, गेट गोइंग। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम इस सम के अंदर x एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 50, माने सबसे पहले इस सम के अंदर हम x on y से सम को शुरू करते हैं। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन,
X on Y, what is the normal equation? X is equal to capital A, remember, plus BXYY, right? As usual, क्या पहले ढूंढोगे आप? BXY ढूंढोगे, right? और BXY ढूंढने के लिए सारी information आपके पास है. BXY का formula क्या है? You are experts in this now. R is equal to SX upon SY. क्यों SX ऊपर? Because हम BXY की बात कर रहे हैं. That is why. Great going. Substitute the values R, SX and SY. कहाँ से आया? It's given to you in this table very clearly. Okay, what do you get? Yes, very good. BXY in the green highlight, as you see, is equal to 2, right? फटाफट, A का formula क्या था? Capital A is equal to X bar minus BXYY bar. Substitute कर दो, सब कुछ है हमारे पास. देखिए yellow highlight, कितना आया? Yes, 100 minus 80. 2 into 40 is 80. So 100 minus 80 gives you a 20 with a plus sign. Substitute कर दो जल्दी से. BXY2, A की value 40. Substitute करो इसके अंदर क्या आया? X is equal to इसके अंदर आपने value substitute कर दी तो X is equal to 20. That is your A plus 2, which was your BXYY. ढूंढना क्या था? सिर्फ आपको line ढूंढनी थी, सिर्फ equation ढूंढना था? नहीं. I told you that you will be given the independent variable, which is y over here. With the help of y is equal to 50, when you substitute the value over here, you will estimate the value of x. Perfect. So, what do you get? Substitute 50. 20 plus 2 into 50 gives you 20 plus 100 is equal to 120 is the estimated value of x. That's your first answer. Great going. Quickly. Now, करना क्या है? आपको x की value दी थी 90. So now we will find out regression line of y on x. Same way. पहले byx ढूंढा. यही formula. Substitute की values कितना आया? 0.32. Very good. उसके बाद क्या करते हैं? याद है ना, आप experts हो गए हो. A की value यही है formula normal. Substitute the values कितना आया? A is equal to 8. बोलो जल्दी, अभी क्या करोगे? byx मिल गया, A मिल गया, अब क्या करेंगे? Yes, very good. You will substitute these values in your y is equal to A plus byxx. Absolutely correct. Okay, so कितना मिला? देखिए, y is equal to 8, जो आपका A था, plus 0.32, जो आपका byx था, x. Sum finish? No. X की value 90 आपको दी हुई थी. Take x is equal to 90. Substitute it over here in place of x. What do you get? You get 8 plus 28.8 is equal to 36.8 is the estimated value of y. Did you understand? Quickly go through. I'm giving you a second. Understood? Great going. Very good. Very impressive. चलिए अभी फटाफट short sums कर लेते हैं. Okay, short sums, 2 marks. Sum number 4, short sum for 2 marks on your screens now. देखिए फटाफट क्या दिया है. Find the regression coefficients. Coefficient है. If the regression line of x on y is given to you. आपको इस सम में बेटा बोल दिया है आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर में कि 3x minus 5y plus 12 is equal to 0 is which regression line? It's a regression line of, पढ़ो, क्या है? x on y. Very good. इसका मतलब क्या हुआ कि x is your independent variable जो आपको अलग करना है, right? तो x एक तरफ आ जाएगा, बाकी सब कुछ उस साइड ले जाएंगे. So, see over here. 3x minus 5y plus 12 is equal to 0 is your x on y. हमको x को अकेले करना है. So, 3x is equal to minus 5y इस साइड आ गया, plus 5y हो गया, plus 12x इस साइड आ गया, minus 12. You remember that? Right? Side बदली, sign बदली. The side changes, the sign changes for an equation. Very good. Up, you don't want that 3. हमको सिर्फ x चाहिए. So you multiply both the sides by, you divide both the sides by 3. Good going. Upon 3, upon 3, upon 3. यहाँ तो 3 cancel हो गया. What do you get? X is equal to
5/3y minus 12/3. आपको क्या चाहिए? a चाहिए कि आपको आपका bxy चाहिए? सम में क्या पूछा है? सम में you require to find out the regression coefficient of what? bxy, that is of x on y. तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था? Whatever is the coefficient of y નો જે પણ સહગુણક હોય છે, that you directly pick up as your bxy. Yes, you remember that. Very good, beta. That's good. So your bxy, as you see the red highlight, is equal to 5/3. If you have understood, 2 out of 2, short sum complete. Coming on to the last sum of this session of the special lecture on your 2019 paper. Again a short sum number 5 of only 2 marks was asked to you. फटाफट अब हम बहुत फास्ट जाएंगे. The regression line of y on x दिया गया है. y on x, okay? ठीक है? x bar is also given to you. You only have to find out y bar. Now after doing so many sums, आपको एक बात तो पता चल गई कि अगर आपके पास वो a ढूंढना होता है तो a के अंदर, right, आपका x bar और y bar का formulas आता है. So quickly, keeping that line of action in mind, let's quickly solve the sum. All right, now see, y on x is 2x plus 3y minus 41 is equal to 0. As usual, y on x है तो y को एक साइड करना है, बाकी सब उस साइड ले जाना है, right? So what happens is 3y is equal to 41 minus 2x. Side change तो sign change. Perfect. I don't want this 3, so I'm dividing both the sides by 3, right? क्या मिल गया? फटाफट देखो. Yes, y is equal to 41/3 minus 2/3. सही है. In the sum आपको dyx चाहिए? नहीं, हमको तो यहाँ पे y bar की वैल्यू चाहिए. And depending upon आपको क्या चाहिए सम में, you select the value you want from your regression line. फिलहाल हमको a से मतलब है. And a कौन सा होता है? जो x के साथ होता है कि नहीं होता है? Yes, जो x के साथ मल्टीपल होता है वो तो आपका byx था, सहगुणक. हमको वो नहीं चाहिए. We want the constant term a, constant value a. Very good. So y is equal to a, constant होता है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई xy नहीं होता है. So check करो, match the two blue highlights. a की वैल्यू क्या है? 41/3 is the value of your a. Very good. और a का फॉर्मूला तो आपको पता ही है. a is equal to y bar minus byx x bar. क्या करोगे? क्या किया मैंने? Simply substitute the values that you have. देखिए, a is equal to 41/3, अब भी ढूंढा हमने, right, is equal to y bar जो आपको ढूंढना है. See a question. Find the value of y bar is the question, right? इसके लिए सारी मेहनत चल रही है. Great going, my class. So y bar, okay, minus 2/3, right? Okay, आपका byx कितना था? -2/3. वो यहाँ से आपको मिल गया, वो तो आपको पता ही है. जरूरत थी तो वैल्यू लगा दी, but be careful of the minus sign, please. Okay, multiplied by x bar is 10. आपको सम में दिया है. चलो फटाफट इसको सॉल्व करो. क्या आता है? 41/3 is equal to your y bar, okay, plus कितना आया? Okay, minus देखिए रेड कलर में मैंने कलर कोडिंग के साथ किया है. माइनस प्लस 2 into 10, 20/3. Very good. अब आपको ढूंढना क्या था? y bar. Okay, तो y bar एक साइड पे रहने दो, plus 20/3 को उस साइड ले लाओ. So side change, sign change. Good going. 41/3 minus 20/3 कितना आया? LCM, लस्सा, simple. 41 minus 20 is 21/3. Okay, 3 ones are and 3 sevens are 21. So my dear class, ये आपके लास्ट सम का आंसर 2 मार्क के लिए मिल गया. y bar is equal to number 7. Quickly go through the sum. I hope you have understood the theory, the short questions, the long questions, और मैंने आपको extra concepts भी थोड़े properties के साथ सम में करवा दिए, so that
what happens? You are ready for your Gujarat University all possible exams. So my dear students, I hope you understood and revised with me the Gujarat University 2019 paper, especially for y'all, for the topic linear regression. This is Dr. Delnaz Jokhi saying all the best to you for all your exams, all the best in life. Thank you. Happy learning forever. Namaskar.